Namaste everyone. I hope you're all doing good. And this is a short podcast just to tell you about the upcoming 1 month. Festivities शुरू हो गए हैं. नवरात्रि कहीं ना कहीं एक फ्रेश एयर भी लेकर आए हैं. लेकिन हाँ, कुछ तो हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी मूड सबका थोड़ा सा ख़राब है. अभी लोग खुश नहीं हैं और अभी वो जो एक खुशी की लहर आनी चाहिए थी त्योहारों के साथ, वो शायद अभी नहीं आ पाई है. तो ऑब्वियसली ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सबको पता है दैट दिस ईयर हैज़न्ट बिन दैट ग्रेट. एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सब वेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये साल ख़त्म हो एंड वी आर एबल टू be out and about, and work should bounce back, life should come back to normal, and we are all wondering what is this new normal going to be like. And to be very honest, because I can only give you a spiritual perspective, I am not an economist or an expert in telling you that when is the economy going to bounce back and everything, but the spiritual perspective is very, very important, because that is the only perspective. That is the only perspective which is going to tell you that this is going to stay on for a bit. Because we have entered a karmic phase after January 2020. And when I say a karmic phase, I also mean that now the karmas become very important. And again, the definition of karmas become very important. I keep saying it again and again that karma's definition is not available in any dictionary. It is a philosophy that is mentioned in our ancient scriptures. So if you read about the word karma on internet, and if you read about it in a Oxford dictionary or a Cambridge dictionary, it's not what goes around comes around. No, that's not karma. Karma is a way deeper subject than how we understand it in today's world. And because people don't have the understanding of this word karma, they often are landing up into relationship issues, financial issues, business problems, health issues, and a lot of unpredictability and suddenness in their lives. Now, we should understand that, astrology or spirituality, this is actually a beautiful connection between the macrocosm and the microcosm. And just like the cycle of the sun and moon creates patterns of time and season, we will see how these cosmic forces now come together to create some more patterns in our life. Now, there's Diwali coming, right? And I think I did post something on 30th of September when Saturn became direct in Capricorn. I did say that we have some time till about 20th of November to focus on some good things, praying, and coincidentally, all the festivals actually are coming between 30th of September and 20th of November. And the biggest festival, जो हिंदूज के लिए, पूरे विश्व के लिए actually एक बहुत ही important festival होता है, that is Deepavali. And it is a 5-day festival which is called the 5-day Mahasadhana. And why I add the word Maha in Deepavali, and I say it's not just sadhana, it is Mahasadhana, because that's how it is. The planetary positions during these days is so conducive that everything can become double and 10 times. So that's why we say Maha means something abundant and bigger that we can create for ourselves. So you all do know that it's been 11 years now. This is going to be the 11th year that I give a Deepavali Mahasadhana.
5-day Mahasadhana, which is actually, the word sadhana should not scare you. It's just a very systematic and the right procedure to understand what Diwali is and to perform the rituals accordingly. And it's, I've seen people doing namesake rituals, or, they're more excited about shopping and about buying expensive things, and which is great, which is very nice, but they don't know who Lakshmi is. जिसको बुलाना चाहते हैं ना, वो कौन है उनको ये भी नहीं पता. So I try to explain the significance of Lakshmi, the significance of each day in these 5 days, and also give you the right rituals, the right timing, the right colors, the right things that you need for puja. So your Mahasadhana kit has a few things, energized things, infused with energy on your family's name that you have to use in Deepavali Puja every year. And I did tell you that it has a yantra, it has Lakshmi Charan, it has Kuber Kunji, it has Trishul, it has a Shakti pyramid, it has Gomati Chakra, Lakshmi ki Kaudiyan, Kamal Gatte ki Mala, Kuber Murti. It has a lot of things which will always be used for Deepavali Puja. हम क्या करते हैं ना, हम बस मार्केट गए और जितना हमें पता है लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की या सिरेमिक का कुछ ले आए, चांदी के सिक्के खरीद लिए, पंडित जी को घर बुला लिया और पंडित जी से एक्सपेक्ट किया कि आप पूजा कर दीजिए. I've not seen that, of course, besides the Mahasadhaks, because the Mahasadhaks have been doing this for years now. And I feel very surprised that, how is it that you don't want to understand what is Deepavali? And why do you think that just praying to Lakshmi ji and doing some aarti and something on the Diwali day will attract abundance and wealth for you? लक्ष्मी तो अष्ट लक्ष्मी होती है. 8 तरीके की लक्ष्मी आपको चाहिए अपने जीवन में टू बी हैप्पी. उसमें हेल्थ भी है, उसमें भवन भी है, उसमें वाहन भी है, उसमें सब कुछ है, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि लक्ष्मी है क्या. कोशिश मैं ज़रूर करती रहती हूँ, कभी वर्कशॉप्स के ज़रिए, कभी डिस्कोर्सेस के ज़रिए, कभी सत्संग के ज़रिए, कभी पॉडकास्ट के ज़रिए कि मैं आपको बताती रहूँ इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और आपके मिथ्स को क्लियर करती रहूँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड दे जस्ट थिंक दैट डूइंग समथिंग only on this one day will attract everything for you, and then all the other 364 days they are cribbing and they are saying कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता, हमारे लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, या हॉस्पिटल बिल्स में हमारी लक्ष्मी चली जाती हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी को बुला ही नहीं पाए. आपने तो उनकी बहन को बुलाया हुआ है जिसका नाम दरिद्रता है. तो एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है, जिसको महासाधना में मैं बताती हूँ. और बहुत लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं. मैं उनको महासाधक ही बोलती हूँ, क्योंकि इन 5 दिनों में जो ये रूटीन फॉलो कर पाए, और मेरी बात मानिए कि ये कोई इतना बड़ा रूटीन नहीं है इसका. एक्चुअली जो लोग ये फॉलो करते हैं, दे एक्चुअली फील सो गुड. They look forward to Mahasadhana every year. But yes, I will call them Mahasadhaks because I have seen the changes and I have seen them understanding who Lakshmi ji is. प्रारब्ध काटने में वो आपकी मदद करती हैं. She does a lot, and that is what you will come to know. So this year I have decided that because times have not been good, so this year I really want to dedicate more to sadhana, and I urge all of you to, rather spending so much of money in your parties outside and all of that, which actually you shouldn't be doing because the pandemic is spreading only because people are out and about, and it seems as if they feel they have no responsibility left. And please understand that the worst could be yet to strike us.
सो प्रकृति चाहती है कि हम थोड़ा सा संभल जाएं एंड लेट्स जस्ट focus more on prayers and sadhana this year. So you will be getting all the details in 5 podcasts. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5. However, all the Mahasadhana kits will be ready to be distributed after 1st of November. So you can contact me and all the numbers that I keep mentioning. You can contact the team and you can get your Mahasadhana kits picked up well in advance because of the logistic issues this year. So I'm going to start the distribution after the 1st of November. And now just to tell you that there are 2 biggest cosmic forces, Jupiter and Saturn, who are going to come together on the 20th of November and who are going to stay together till 6th of April 2021. And this transit is conjunct in Capricorn. And Capricorn में शनि और गुरु का फिर साथ में आ जाना, super energy combination. And Jupiter has its own natural energy and Saturn has his own opposing energy. So, you know, that's why I'm saying that for some people it's going to work really well and for some people it's not going to work so well. Because they are 2 opposing forces. Because Jupiter's natural tendency is to expand, you know, in areas of abundance. And Saturn's energy is to oppose because he's a limitation, because he works on karma. He keeps evaluating you on karma. Now with these 2 giants coming together, and this is happening after 19.5 years, it is going to set a new direction and a brand new path. And that's why I'm saying that duties and action, which is Jupiter is dharma and Shani is karma. So duties and action yoga being formed in Capricorn denotes businesses, structuring, restructuring, new cabinets, everything new. So Dharam Yog and Karma Yog is one of the greatest fortunate yogas for people who will be able to understand what I'm saying. So please keep that in mind, that don't take anything for granted now anymore. Yeah. So again, it could be different for different people because I keep telling you that nothing in astrology is the same. But 2 things I've made clear in this podcast. One is that 30 सितंबर और 20 नवंबर का जो समय है जिसमें सब त्योहार आ रहे हैं, इसमें क्या करना है और जो सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का जो आ चुका है उसमें आपको क्या भाव रखना है इस बार. व्हाट शुड बी योर भाव, कहाँ फोकस होना चाहिए आपका, so that you can come back on track. And for that I have been giving the Mahasadhana for 11 years, and for all of you who wish to be a part of the Mahasadhana, please contact me. And the guidelines this time are not coming in a PDF document because every time people get confused. Some people understand Hindi, some people understand English. So I have decided to do a podcast each day separately, जिससे कि आपको हर दिन का अलग अलग पूरा अच्छे से विवरण मिल जाए. And the second thing through this podcast that I want to tell you is that Jupiter and Saturn, Dharam and Karam, coming together again on 20th of November. It's a big thing. It's a big thing, and we all need to understand that these 2 planets are the biggest and the heaviest cosmic forces of the universe. ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्ग ऊर्जा वाले हैं ये दोनों ग्रह, जुपिटर एंड सैटर्न. दोनों टीचर्स हैं. जुपिटर एक बहुत प्यार से आपको शास्त्र का ज्ञान देते हैं, आपको बार बार माफ करते हैं, आप गलती करोगे तो आपको बार बार माफ करते हैं. लेकिन शनि तो डंडे मार के सिखाने वाले टीचर हैं, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ कर्म की भाषा जानते हैं और वो किसी को भी फेवरेटिज्म नहीं करते. इसलिए आप देखेंगे कि जनवरी
जब से शनि कैप्रिकॉर्न में आए हैं तब से वो बिल्कुल इक्वल न्याय कर रहे हैं सबके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल शैटर कर दिया है उन्होंने, लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस और पूरे पूरे विश्व का ओवर कॉन्फिडेंस और लीडर्स का ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर दिया है। एक छोटे से पैंडेमिक को कोई भी कंट्री कंट्रोल नहीं कर पाई। कैन यू इमेजिन? इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ आ गया था, लेकिन हम इंसान अपने आप को इतना वाइज और इतना इंटेलिजेंट समझ रहा था, लेकिन एक पैंडेमिक को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। शनि कर्म। तो अब जो है, फिर बोलूंगी आपको, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, जो लोग इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, वो लोग तो पार लग जाएंगे। लेकिन जो लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि मेरा फायदा हो जाए, बस मेरा काम चल पड़े, उनको मैं ये बता दूं कि शनि कभी भी किसी भी अनएथिकल चीज़ को, किसी भी गलत चीज़ को, किसी भी गलत टेंडेंसी को सपोर्ट करते ही नहीं हैं। और अब तो गुरु और शनि साथ में आने वाले हैं 20 नवंबर को, तो तैयारी कर लीजिए उससे पहले। और दीपावली में अच्छे से पूजा कीजिए, लक्ष्मी माँ के आवाहन की तैयारियां कीजिए और समझिए कि एक्चुअली लक्ष्मी का मतलब क्या होता है। अपने शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, घरों में इस बार सिर्फ एक पूजा पाठ का माहौल रखिए। इस बार अपना जितना भी आपने कहते हैं ना कि जितना भी धन आप खर्चना चाहते हैं, मैंने देखा लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं, पार्टीज चलती हैं, ताश पार्टीज चलती हैं, इंजॉय करते हैं, वेरी गुड। बट इस बार थोड़ा सा ध्यान आप पूजा पाठ में लगाइए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे बाय विच यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम ऑल दिस दैट हैज हैपेंड in this year. So thank you very much, and I will come back to you now with the 5 days of Deepavali Mahasadhana podcasts. And for ordering your Mahasadhana kits, I urge all of you to please hurry up, because there is a big logistic issue this time, couriers and everything not really working well. So for all the local people, please collect your Mahasadhana kits. And like I said, for all the old Mahasadhaks, if you have something missing in your kits, please let me know. And of course, join us for the Mahasatsang on the 1st of November. Thank you all very much. आपके लिए ये त्योहारों का समय शुभ हो, आप सबके परिवारों को जोड़ के रखिए और प्रेम और साधना और तप और जप, इसमें थोड़ा सा आप समय लगाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एक रिवाइवल वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल वेरी वेरी सून। नमस्कार, धन्यवाद।